चलें अभी हम इसको एड्रेस भी कर लेते हैं। हुज़ैफा पूछ रहे हैं दैट्स व्हाट इज द स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल फार्मेसी इन कुवैत? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इंडस्ट्री इन कुवैत? जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे ज्यादातर मेडिसिन जो है, थोड़ा सा एक आपको आइडिया दे दूं, मेडिसिन जो है वो ज्यादातर इंपोर्ट होती हैं, यहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं होती। तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सिर्फ एक ही है कोई साइड, सऊदी फार्मास्यूटिकल्स के नाम से, वो भी सऊदी अरब और उनकी जॉइंट एफिलिएशन है। तो अभी यहाँ पे एक है इंडस्ट्रियल फार्मेसी, एक ही है कोई सऊदी, लेकिन फिर भी वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। वहां पे लैंग्वेज का भी कोई नहीं है और लाइसेंस का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वहां पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। लेकिन फिर वही बात, आपको 2 साल का एक्सपीरियंस, आपका वहां पे इंडस्ट्री में 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी चल जाता है। जो हमने पहले मेंशन किया वो गवर्नमेंट है, डोंट मिक्स इट विद दैट वन। अब हम प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 साल का आपका इंडस्ट्री रेलिवेंट फील्ड में 2 इयर्स, मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस जो है वो आपका चल जाएगा। और जब आप यहाँ आते हैं और आपके पास वैलिड वीजा है, आप किसी भी, यहाँ पे कोई सऊदी फार्मास्यूटिकल एक ही है, थोड़ा कंपटीशन है वहां पे भी, लेकिन आपको वहां पे क्यूए में, क्यूसी में इजीली मिल जाता है। फिर आप उसके बाद चेक कर ले, अगर आपके पास लैंग्वेज का थोड़ा है अच्छा, तो आप रेगुलेटरी अफेयर्स में भी आ सकते हैं। पेपर्स, डॉक्यूमेंटेशन, ये उसमें लाइसेंस की कोई शर्त नहीं है, और आप इजीली जो है कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात कि एक फार्मिस्ट, एक इंडस्ट्री है, पूरे कुवैत को कवर करती है, तो बहुत कम ऐसा होता है कि वहां पे जो है वो जॉब्स ओपन होती हैं, लेकिन फिर भी इट्स अवेलेबल, इट्स देयर। बिल्कुल, ये मैं ना बल्कि बाकी तमाम जो लिसनर्स हैं ना, मैं उनके लिए भी थोड़ा सा ये बात बता दूं। ये बहुत अक्सर ये क्वेश्चन ड्रॉप होता है मेरे और भी सेशंस में, और मेरे डीएम में भी अक्सर लोग पूछते हैं कि इंडस्ट्री का क्या स्कोप है बाहर। तो उसका मैं एक ओवरऑल जनरल आपको आइडिया दे दूं। ओवरऑल इंडस्ट्रीज जो सी ना वो आपकी मीट नहीं करती हैं मार्केट की, जो मार्केट में जितना फार्मासिस्ट है ना, उसको उसके लिए इतनी जॉब्स अवेलेबल नहीं है थ्रू आउट द ग्लोब। जो सा है वो उसकी इंडस्ट्री की इतनी जॉब्स अवेलेबल नहीं है। एज अगर आप उसको कंपेयर करें रिटेल और हॉस्पिटल सेटअप के साथ, तो इंडस्ट्री में भी जॉब्स जो सी हैं वो बहुत कम है। तो लेकिन उसकी बेसिस के ऊपर आपका निकलना दैट इज पॉसिबल। आपका अब्रॉड जो सा है, बहुत सारे लोगों का वीजास लगे हैं रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के लिए, बहुत सारे लोग इंडस्ट्रीज वीजा पे भी मूव किए हैं। एंड उसके लिए अच्छी बात ये होती है कि आपके पास आपको वही बात है कि कोई कैप्स नहीं देना, कोई एग्जाम नहीं देना होता, आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है, और आप डायरेक्ट जो सा है वो इंडस्ट्री के वीजे पे जो सा है आप मूव कर तो जाते हैं। लेकिन आगे गारंटी ये नहीं होती है कि आपको इंडस्ट्री में जॉब भी मिलेगी या नहीं मिलेगी। एंड वो चीज़ आई थिंक हर जगह पे ही है। और जैसा कि आप बता रहे हो, कुवैत में आई थिंक सिर्फ एक ही इंडस्ट्री है फार्मास्यूटिकल, बाकी सारी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं। तो ये चीज़ें ज़रूर कंसिडर करनी चाहिए बच्चों को। वेलकम बैक इमरान। आई हैव टू आस्क यू, नो इश्यूज, नो इश्यूज, दैट इज टोटली फाइन। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं, सो वी डोंट माइंड दैट। मुझे थोड़ा सा आप लाइसेंसिंग एग्जाम के बारे में गाइड करेंगे आप, और उसका फॉर्मेट यूएई में अगर मूव करना है तो probably DHA। यस, सो बेसिकली एक दो इम्पोर्टेंट जो बातें थी वो मैंने डॉक्यूमेंटेशन में, पहले मैं उसको कंप्लीट कर दूं। जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं, आपके पास बेसिक डिग्रीज और फार्मेसी लाइसेंस काउंसिल भी है, उसके बाद डाटा फ्लो वेरिफिकेशन आती है। ठीक है, तो वो डाटा फ्लो वेरिफिकेशन करवाने के पहले आपको DHA की साइट पर, जो कि शरियान के नाम से है, यू हैव टू क्रिएट एन अकाउंट। ठीक है, उसका प्रॉपर ट्यूटोरियल DHA की वेबसाइट पर ही दिया गया है कि फ्रॉम वेयर यू विल अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग। और मैं एक बात जरूर एक एज ए कॉशन के तौर पर बताऊंगा सबको कि नेवर यूज एनी काइंड ऑफ फेक डॉक्यूमेंट। It will be very easy to capture and you will be banned throughout the life. No one can do anything. So never try to do that, because they have a lot of resources. They are very much connected. They are more intelligent than anything. They know what is actual and what is not, and they can find it through different sources. Okay, so once you have आपकी बात को ना, आई एम रियली सॉरी इमरान, लेकिन मैं आपकी बात को ना यहाँ पे स्ट्रेंथन करना चाहूंगा, बिकॉज ये सिर्फ थ्योरेटिकल बात नहीं है, ये कहने की बात नहीं है, मैंने इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है, बिकॉज आई एम इन टच विद सो मेनी डिफरेंट स्टूडेंट्स। और अभी रिसेंटली बल्कि ये ममूना के साथ भी जो है ना वो मैंने शेयर किया था कुवैत के लिए। उन्होंने अपना फेक हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस जो है वो लगाया हुआ था और उनकी रिजेक्शन हो गई है।
and I don't think so that she's gonna have any chance soon in UAE or at least कुवैत में तो वो नहीं जाने वाली दोबारा। और इसी तरीके से मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे और उनकी फार्मेसीज हैं, सो उनको भी जौन सा है वो, उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि इतनी स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशंस ऑस्ट्रेलिया की नहीं होती हैं, अपनी कनाडा की नहीं होती हैं, नॉर्वे की नहीं होती हैं, जितनी कि यूएई की होती हैं। ओमान स्पेशली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इस मामले में, और दुबई बहुत स्ट्रिक्ट है, कुवैत बहुत स्ट्रिक्ट है। तो ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है, नेवर यूज फेक डॉक्यूमेंट्स। No, don't use it. Yes, exactly. Please continue, so Imran. Once you have created, yes, thank you. Once you have created your account on Sharian DHA site, they will give you, I mean, indication and notification which you need to, they will give you a document. They already have forwarded your documents from their side to them, and you are getting one link. So you have to create an account with the PSP. It's you have to give a right email ID, because final verification as a completion certificate you will receive through email. This is it takes some time, 2 to 3 weeks, 1 month, 6 weeks. It depends. It depends how soon your university responded, how soon your employer responded on your experience. Two things they will verify most commonly. One is your degree, and second is your experience certificate. So if they have called PSV, which is primary source verification, they have called to your employer is not responding email or even phone call, it will go delay. So you need to be very much careful. Who is your employer? The contact detail must be authentic and must be in working. It should not be like we have old connection and we put somewhere else email ID and all. So once you have done all these things, then your next link will open. You are eligible. Yes, your documents are fine, and you can go for a exam registration. You will get a schedule. You will get a date and all those things. There is again tutorial available on the DHA website. You can explain. Now coming to that question which Umair has asked, what is a pattern of exam and how it will be? Well, with the passage of time, like 10 years back, 5 years back, 3 years back, and even 1 year back, it's getting more advanced. It's getting complex. Basically, we say our people who are getting failed, they say it's very tough, but it's not tough. They are trying to add some latest news, latest updates. So like 10 or 20 years back, some of the molecules were not there, and now it's there in the world. It's registered. For example, COVID related things. So you need to upgrade your knowledge. It's not like you are using a 10 years old notes and try to pass the exam. It will not happen. The concentration should be on dosage, on the products classification, as well as pharmaceutical therapeutic usage. They are sometimes calculations more often, but very, very common. For example, one drip will complete in 1 hour. How many drops or how many ml will go in 1 minute, like that. Similarly, they will usually ask side effects of a common product. Let's say you are using statins. So what is a common side effect of statins? And how you, a toxicity related question. So it's, I can say you need to be strong in pharmacology. You need to be strong in pharmacy practice. And they ask very simple, basic things. They will not ask you complex like chemistry, organic, inorganic, and all those things. No. What is being relevant to patient in a simple language, they will ask. Okay. So it's a MCQs pattern. There is no subjective. It's all MCQs. You need to give an answer. There is a timeline. Usually you will get a result on the either same day or maximum next day itself. You pass or fail. You have unlimited try to give, but definitely it costs you when you process through your exam and all those things. So it costs around 1500 dirham for an exam. Sometime it varies. First attempt, second attempt, and third attempt and all. Documentations and all, as yes, you need to pay data flow as well. Okay. I think Imran has some issue again. So I'm going to turn back to you, Mona. Same. यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में भी सेम ऐसा ही है. बस यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं हम कि कुवैत में जो है वो डेटा फ्लो की जगह डेटा चेक होता है. तो सबसे पहले आप यहाँ पे जब कुवैत में आते हैं
और आपके यहाँ पे वीजा है, आप प्राइवेट सेक्टर में, तो आपका स्पाउस वीजा है, फैमिली वीजा है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको यहाँ पे कुवैत में 2 इयर्स का एक्सपीरियंस जो है वो लेना पड़ता है एज अ प्रोमोटर या ट्रेनी। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक डेजिग्नेशन नहीं है या रूल नहीं है कि जिसके थ्रू आप रजिस्टर होंगे एज अ ट्रेनी। आप बस एज अ प्रोमोटर या ऐसी डेजिग्नेशन पे काम कर सकते हैं कि जो जिसके लिए लाइसेंस रिक्वायरमेंट नहीं होती, जस्ट टू गो थ्रू द मार्केट एंड गो थ्रू द एक्सपीरियंसेस विद द डॉक्टर। यहाँ पे डॉक्टर्स का एक स्पेसिफिक वो एक मेडिकल सेटअप है और वो मेडिकेशंस आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर, रूल्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर। सबसे मेन पॉइंट जो यहाँ पे है वो स्ट्रिक्टनेस, बहुत ज्यादा रूल्स। लाइक हम अगर एक बॉक्स भी ऑगमेंटन का विदाउट प्रिस्क्रिप्शन सेल करते हैं और हर वक्त सुबह दोपहर शाम, लाइक किसी भी टाइम कोई भी तफ्तीश आ जाती है और वो हमें पकड़ लेती है और वो 1 महीने के लिए फार्मेसी को क्लोज कर देते हैं। तो वी हैव टू स्टिक टू द रूल्स। हमें जो आप फोरेंसिक पढ़ते हैं वो वही फोरेंसिक है जो यहाँ है, लेकिन यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है, वहां पे सिर्फ बुक्स तक है। तो ये चीज आपको फोरेंसिक आपको ये पता होना चाहिए कि रेस्ट्रिक्टेड मेडिकल मेडिसिन कौन सी हैं यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में, पता होना चाहिए कि डेंजरस कौन सी हैं, पता होना चाहिए कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कौन से हैं, उसके अलावा ये हार्मोन्स में कौन कौन सी आती हैं रेस्ट्रिक्टेड में, फिर मुखद्दर ये जैसे हम नॉर्कोटिक्स कहते हैं उसमें कौन से। तो ये क्लासिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए रिटेल में काम करने के लिए, प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए या हॉस्पिटल में, क्योंकि ये मस्ट है। अगर आपको ये चीजें पता है, बुक में रजिस्टर आपको एंट्री पता है कि हमने एंट्री करनी होती है, किन मेडिसिन की एंट्री करनी होती है, किसका रिकॉर्ड रखना होता है, ये आपको गाइड करते हैं, लेकिन ये आपको खुद भी एज अ बेसिक टिप्स पता होनी चाहिए। उसके बाद वहाँ पे जी, तो ये सब चीजें जो है वो इन्फॉर्मेशन जो इमरान बता रहे थे, तो उसमें ये मैं ऐड कर दूं कि इस सब के साथ थेराप्यूटिक्स और फार्माकोलॉजी के साथ यहाँ पे फोरेंसिक जो है वो बहुत इम्प्लीमेंट होती है, क्योंकि हम हर वक्त अंडर द सर्विलेंस होते हैं। सो वी हैव टू कीप दैट इन माइंड आल्सो। लेकिन रिमाइंड करवाइएगा मुझे जरा एक दफा दोबारा कि मैंने शायद ये आपने मुझे पहले बताया कि कुवैत के अंदर लाइसेंसिंग एग्जाम जो सा है वो नहीं है, राइट? नहीं, अगर आप एज अ गवर्नमेंट के तौर पर आ रहे हैं, लेकिन अगर आप एज अ प्राइवेट करते हैं फिर आपको देना पड़ेगा। बहुत टफ है, लाइक 2-3 साल लग जाते हैं हम लोगों को। आपको 2 साल का यहाँ एक्सपीरियंस लेना है। अब मैं आपको स्टेप वाइज लाइक बता देती हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे आने वीजा, यस, उनके लिए जरा इंस्ट्रक्शंस प्लीज गो अहेड। आपने सबसे पहले यहाँ पे आना है तो आपने एज अ प्रोमोटर, आपने कहीं भी प्राइवेट हॉस्पिटल में एज अ प्रोमोटर, एज अ ट्रेनी, एज अ असिस्टेंट फार्मासिस्ट जॉब करनी है आपको। फार्मासिस्ट कोई भी एज अ फार्मासिस्ट एज अ जॉब आप नहीं कर सकते, बेशक आप मिड करियर लेवल से उठ के आए हो पाकिस्तान से, ठीक है। यहाँ के लिए आप नॉट कंसिडर यू एज अ फार्मासिस्ट, आप यू आर नॉट अलाउड टू डू सम थिंग्स, बट ओके, देन यू हैव टू कंप्लीट योर 2 इयर्स। वो रजिस्टर्ड एज अ फार्मासिस्ट नहीं होगा, आपको वो फार्मेसी का एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। तो उसके बीच में आप, लेकिन बिटवीन दैट यू कैन स्टार्ट योर प्रोसेस फॉर लाइसेंसिंग। उसके लिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो आपको हमने पहले मेंशन किए डॉक्यूमेंट्स वही हैं, डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, ये वो, उसको आप डेटा चेक वेबसाइट पे अपलोड कर दीजिए, ऑल अटेस्टेड। वहां पे अटेस्ट होने के बाद यहाँ पे जब आप कुवैत में आते हैं, आप यहाँ रह रहे हैं, तो आपको यहाँ पे मूफा से दोबारा वही डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट कराने होते हैं। दिस इज एन एडिशनल पॉइंट हियर, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में वो आपको हेल्प कर देंगे, लेकिन यहाँ पे आपको खुद करना है। आपको आना है और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वहां से अटेस्ट कराने के बाद मोफा कुवैत से अटेस्ट कराने हैं। फिर आप उसको डेटा चेक में विद योर 2 इयर्स वैलिड एक्सपीरियंस इन पाकिस्तान, आपके 3 डॉक्यूमेंट की इवेल्युएशन होगी। वो इवेल्युएशन सेम वैसे ही जैसे इमरान ने बताया कि वो बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, इट टेक्स अप टू 2 to 3 months। अभी तो ऑनलाइन हो गया है सब, लेकिन उस इवेल्युएशन के बाद वो एक एक आपको डॉक्टर उधर कॉल करते हैं, उनसे पूछते हैं, उसकी वेरिफिकेशन करते हैं, HEC से कंसर्न करते हैं, उनके बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। जब वो वहां पे सेटिस्फाई हो जाते हैं, वो इवेल्युएशन रिपोर्ट जिसे हम कहते हैं डेटा चेक रिपोर्ट, वो आपको इशू कर देते हैं। जब डेटा चेक रिपोर्ट आपके पास आ जाती है तो वो आपको इन हैंड नहीं देते, वो डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ कुवैत में भेज देते हैं। जब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कुवैत में पहुंच जाती है, यहाँ पे साथ साथ आप एज एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं प्रोमोटर, फिर आप एक एम्प्लॉयर ढूंढते हैं जो आपको एक लेटर देता है कि यू आर एलिजिबल टू वर्क एज फार्मासिस्ट एंड यू आर नॉट लाइसेंस्ड। आपको एक एम्प्लॉयर या जिसके अंडर आप काम कर रहे होते हैं एज अ प्रोमोटर, आप उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे एम्प्लॉयर लेटर चाहिए। सो फर्स्ट थिंग वी नीड एज अ प्रोमोटर सम जॉब, सेकंड थिंग we need to apply on the data check, and now the third thing is you need an employer letter. एम्प्लॉयर लेटर शुड बी इन योर हैंड। जब आपके पास एम्प्लॉयर लेटर आता है, उधर से डाटा चेक एवेल्युएशन हो जाती है, देन ये सब आप अपलोड करते हैं एक HEC की वेबसाइट पे, HEC कुवैत की वेबसाइट पे आप अपलोड करते हैं। फिर वो आपके डॉक्यूमेंटेशन जो है वो
आपका एम्प्लॉयर रिक्वेस्ट भेजता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कुवैत को कि आप इसका एग्जाम आप ले सकते हैं बिकॉज ही इज अ ट्रस्टेड एम्प्लॉई और जो भी है, फिर वो आपका एग्जाम लेते हैं, वो एग्जाम की डेट देते हैं और साथ साथ आपके जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे इक्विवेलेंट होते हैं, पहले इवेल्युएट होते हैं फिर इक्विवेलेंट होते हैं। तो इक्विवेलेंसी टेक्स 2 इयर्स। इक्विवेलेंसी में क्या होता है कि हमारी डिग्री फार्म डी है तो वो उसको यहाँ के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग इक्विवेलेट करते हैं। तो इक्विवेलेशन इज द लास्ट स्टेप। इक्विवेलेशन टेक्स टू मच टाइम, तो दे अलाउड अस टू वर्क एज अ फार्मासिस्ट अलोंग द इक्विवेलेंसी। तो हम लोगों को जब भी एम्प्लॉयर लेटर मिल जाता है तो साथ ही एम्प्लॉयर रिक्वेस्ट भेजता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को। ये वो चीजें हैं जो हम नहीं करते, वो एम्प्लॉयर करता है ऑन आवर बिहाफ, ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर इज अ मस्ट, कफील इज अ मस्ट, आप खुद नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप घर बैठे हैं और आप अप्लाई करते, मतलब नहीं, आपको 2 साल पूरे करने हैं, आपको एम्प्लॉयर ढूंढना है, वो एम्प्लॉयर आपको आपका लेटर भेजेगा, फिर वो एम्प्लॉयर प्रोसेस करेगा। फिर उन्होंने सेम ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ कि उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट वहां पे भेजी और उसके बाद आई हैव टू अपीयर इन द एग्जाम। एग्जाम वैसे ही बहुत स्ट्रिक्ट होता है, फार्माकोलॉजी बहुत ज्यादा होती है, अरेबिक पोर्शन होता है, फोरेंसिक बहुत ज्यादा होता है उसमें। अरेबिक पोर्शन में अच्छी बात ये होती है कि वो नंबर्स होते हैं, लाइक यू हैव टू रिमेम्बर कि कौन सा लॉ किसके अकॉर्डिंग आता है, उसमें कौन सी सजा है और कौन सा उसके अकूबा भी सही अकूबा गरामा, लाइक क्या है उसकी पनिशमेंट्स क्या है, तो वो सब उसके अंदर मेंशन होता है। तो आप कर सकते हैं, इसका मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपकी स्किल्स अच्छे हैं, आपकी फार्माकोलॉजी अच्छी है, आपको मेडिसिन का, क्रॉनिक मेडिसिन का बहुत इंफॉर्मेशन है, अप टू डेट नॉलेज ऑफ दिस, अभी ये न्यू लाइन इंटरल्यूकिन्स यहाँ पे बहुत अभी जो है उसकी एग्जाम्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ये एक ऐसी चीज है जो हम अपने कोर्स में मिस कर जाते हैं या इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकली लाइफ में अभी बहुत ज्यादा है। तो मैं आप स्टूडेंट्स को बोलूंगी कि अगर जो पढ़ रहे हैं, आप कहीं भी जाने का सोचते हैं, प्लीज जो पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िए। ये नहीं सोचिए कि ये चॉइस में छोड़ देंगे और बाद में बहुत सारे आपको बाद में मुश्किल होती है, आपको दोबारा से रीस्टडी करनी पड़ती है, आपको ऐसा लगता है कि जैसे लाइक वी डोंट नो एनीथिंग। प्रैक्टिकली उसको देखें कि जो मैं मेडिसिन पढ़ रहा हूँ उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है, क्या वो प्रैक्टिकली यूज हो रही है कि बस लाइक उसका क्या है, और इंटरेक्शंस ये सब आनी चाहिए। फिर जब आप एग्जाम क्लियर कर देते हैं, नाउ यू सिट बैक एंड रिलैक्स, मतलब फिर आपको सब कुछ प्लेट में मिलता है, अच्छी सैलरी भी मिल जाती है और डेजिग्नेशन भी मिल जाती है, और फिर आपको अकॉर्डिंग टू कुवैत लॉ प्रोटेक्शन भी मिलती है कि आपको कोई कुछ कह नहीं सकता, आप पे कोई लाइक फिर आप यू सिट बैक एंड रिलैक्स। बिल्कुल बिल्कुल। मोना, मुझे इमरान को टाइम देना, बिकॉज इमरान इज फेसिंग सर्टेन प्रॉब्लम्स। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ हिज इंटरनेट, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से वर्स्ट इंटरनेट है यूएई का। इट्स अबाउट द इंस्टाग्राम वीडियो रिस्ट्रिक्शन इन यूएई। तो ही इज यूजिंग वीपीएन। मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं, ही इज फेसिंग अ प्रॉब्लम एंड दैट इज काइंड ऑफ एम्बैरेसिंग फॉर अस एज वेल। लेकिन कोई नहीं, खैर है, चलता है इतना तो। थोड़ा बहुत हम इनका शुक्रिया कि वो फिर भी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बार बार ज्वाइन कर रहे हैं। You know, I'm very surprised. It never happened when we use Zoom or Microsoft Team. We have thousands of meetings covering last 2 years. It's very tough. While driving on the way we used to have, but I think this VPN is first my experience. But however, let's proceed. बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, प्रोसीड करने से पहले मैं मोना की बात समराइज कर दूं। मोना, आपने रजिस्ट्रेशन का बताया कि 2 साल आपको पहले एज एन असिस्टेंट फार्मासिस्ट जॉब करने हैं, उसके बाद तकरीबन आपको 2 साल ही और लग जाते हैं इक्विवेलेंसी हासिल करने के लिए। इज दिस करेक्ट? नो, यू कैन गो साइड बाय साइड, मतलब आप साथ साथ एम्प्लॉयर भी ढूंढे, आप साथ साथ जॉब भी कीजिए, आप कर सकते हैं, मतलब बिकॉज यू आर नॉट लीगल एंड यू कैन डू एनीथिंग, बस यू कैन अप्लाई, कीप ऑन ट्राइंग बस। So licensed pharmacist होने तक and from the sketch, how much time it requires? मिनिमम 2 years, मतलब 2 years लग जाते हैं। ठीक है, राइट, 2 साल लग जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको एम्प्लॉयर ढूंढ, अगर आपको एम्प्लॉयर मिल जाता है और आपके रिसोर्सेज हैं तो 6 महीने जो है वो 6 months to 2 years टाइम होता है, डिपेंडिंग ऑन एम्प्लॉयर्स। चलें, ठीक हो गया। ओके इमरान, यू वर स्टेटिंग अबाउट द लाइसेंसिंग एग्जाम। उसके अंदर आपने बताया आप यहाँ पे थे कि 1500 दिरहम जो से हैं वो इसका खर्चा आता है, और फिर हमारी बात डिसकंटिन्यू हो गई थी। Yes, so basically it depends on your number of tries. जो पहले आप PSV के लिए payment fee करते हो, I think it's around 480 or something like that. Then based on your documentation, experience certificate or degree or how many documents you have, so PSV charge accordingly. Exam, that's all. So on an average, I can say altogether your documentation, your registrations and everything, it costs you, you can say
around 4,000 dirham. Alright, so मोना मुझे ये बताइएगा कि how do you see lifestyle in Kuwait? What do you think the lifestyle in Kuwait for the pharmacist is right now? जब आपके पास लाइसेंस नहीं होता है तो यू आर नॉट ट्रीटेड वेल, लाइक यू आर लाइक ओके आप असिस्टेंट हैं और आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो होती ही नहीं है, बट एवरीथिंग इज फॉर यू बिकॉज यू आर स्ट्रगलिंग एंड दे नो यू आर स्ट्रगलिंग एंड यू आर नॉट लीगल। मतलब अभी तफ्तीश आती है तो यू कैन नॉट शो योर सेल्फ एज अ फार्मासिस्ट, यू हैव टू से नो आई एम अ प्रमोटर लाइक दिस, बट यू हैव टू वर्क हार्ड। तो इस सब चीजों में ये है कि आप अपनी स्किल्स इंप्रूव कर सकते हो। फिर जब आपके पास लाइसेंस आ जाता है तो उस वक्त उसके बाद फिर आपको जो होता है वो रिस्पेक्ट भी मिलती है एज अ एम्प्लॉयर, आपको वो रिकॉग्निशन भी मिलती है। How much are we looking at? How much are we looking at? अगर आप एज असिस्टेंट फार्मासिस्ट काम करते हैं उस टाइम पे आप कितना मतलब सैलरी पैकेज देख रहे हैं, आपकी सेविंग्स कितनी है और आफ्टर बिकमिंग रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट? असिस्टेंट चूंकि रजिस्टर्ड नहीं होता है इसीलिए बहुत ज्यादा इस पे लेबर लॉ हॉटेस्ट क्वेश्चन एवर, जो हर कोई यही सुनना चाह रहा होता है बेसिकली। प्लीज आप ये आप देखिए कि आप कहीं भी आप पाकिस्तान में रहते हैं ना, तो आप यहाँ आते हैं, आप यहाँ पे स्ट्रगल करनी पड़ती है आपको। आप वहां से बेशक आप मैं आपको बताया कि आप सीनियर लेवल से उठ के आएंगे, लेकिन आप जिस नए एनवायरनमेंट में आएंगे, जिस स्कूल में आप आएंगे, आप देखेंगे कि लोग वहां से आपसे ज्यादा और बहुत ज्यादा अपडेटेड हैं। हम किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। उनके पास नॉलेज बहुत अच्छा है, उनकी सेलिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, उनकी सेल्स बहुत अच्छी है, रिटेल, उनके पास ऐसे ऐसे आइडियाज हैं जो आप मतलब हम लोग इतने सर्कल में नहीं देखते हैं, तो हम उनके साथ कंपेयर करें तो फिर हमें सीखना पड़ता है बहुत ज्यादा। तो आपको पास जब लाइसेंस नहीं है तो आप एक्सपेक्ट नहीं कीजिए ज्यादा, आप डिसहार्ट नहीं हुए, छोड़िए नहीं। आप देखिए कि कितने लोग हैं आप में से जो मेहनत करते हैं और सोचते हैं कि नहीं वी हैव टू अचीव आवर गोल्स, तो आप उनमें से नहीं हो जो कहें कि अली वली यार लेट्स गो फॉर शॉपिंग, ग्रोसरी करते हैं और बैठते हैं, क्या जरूरत है इतना करने की। तो डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। ये थोड़ा सा मुश्किल टाइम होता है एज असिस्टेंट जब आप काम कर रहे होते हैं। आप उसको एक्सपीरियंस के तौर पे लें, आप उसको लें, आप इस तरह लें कि आपका स्किल सेट जो इम्प्रूव हो। और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया हुआ, जो जॉब्स नहीं करते हैं, जो अभी रिसेंटली वेट करते हैं अपने डिग्रीज का, उनके लिए एक बड़ी अच्छी बात मैं आपको बताती हूँ कि आप अपना टाइम कैसे कवर कर सकते हैं कि आप जब जॉब पे जाएं तो आपके पास प्लस पॉइंट्स हो। अभी अपने यूएई, कुवैत या किसी यहाँ पे एक जो है वो इंश्योरेंस सेटअप जो है वो बहुत फेमस है। तो आप क्या करें कि आप फार्मासिस्ट के तौर पे आप अभी आप वेट कर रहे हैं अपने डिग्री का या आपके पास जॉब नहीं है, तो आप लिंक्डइन जो है वो ज्वाइन कीजिए, लिंक्डइन लर्निंग, उसके साथ ओपन WH वेबसाइट्स हैं, उस पर जाइए। वहां पे कोडिंग, इंश्योरेंस कोडिंग और इस तरह के शॉर्ट कोर्सेज हैं और हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो प्लीज खुदारा आप फारिग टाइम में बैठ के उन कोर्सेज को लीजिए, उनकी सर्टिफिकेशन लीजिए, लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाइए। जब तक आप वेट करते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन का, उस टाइम को सेव कीजिए। अगर आप एज असिस्टेंट काम कर रहे होते हैं, घर आइए, अगर आपके पास टाइम है, आपकी फैमिली नहीं है, तो आप प्लीज शॉर्ट कोर्सेज जरूर कीजिए, अपने स्किल सेट को इम्प्रूव कीजिए। फिर जब आप मार्केट में जाते हैं, आपके पास लाइसेंस आता है ना, तो आपके पास मतलब एक डेजिग्नेशन नहीं होती, फिर आपके पास 2 स्किल्स आ जाते हैं। आपको इंश्योरेंस और कोडिंग मेंशन मैं इसलिए कर रही हूँ कि ये यूएई कुवैत में अभी बहुत ज्यादा जो है वो फार्मासिस्ट का एक प्लस पॉइंट है। स्पेशली फार्मासिस्ट वो हायर हो रहे हैं जिनको लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, वो एज अ इंश्योरेंस जो है वो हायर हो रहे हैं, इंश्योरेंस फार्मासिस्ट, एज अ कॉल सेंटर फार्मासिस्ट जो कि इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई है, इंटरेक्शंस हो गई हैं, मेडिकेशन एरर्स, उसको सॉल्व करने के लिए ऑन अवेलेबल 24 आवर्स। तो आप इन चीज के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है, आप अपनी डिग्री लीजिए, उसके साथ आप डिग्री के साथ ही आप अपने ये स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए और आगे यहाँ पे एज इंश्योरेंस फार्मासिस्ट काम कीजिए। इसके लिए लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम। बिल्कुल, मैं तो बल्कि अपने स्टूडेंट्स को जो उनसा है और मैं वैसे भी मोटिवेट करता रहता हूँ इस चीज के ऊपर कि वेट नहीं करो। ये नहीं कि कुवैत जाके ये काम करो, अभी से करो और अपना कोई साइड स्किल डेवलप करो, ठीक है ना, सो दैट यू मे बी एबल टू अर्न एट। अब जब तक जॉब नहीं मिलती है आपको बहुत सारे काम आप घर में, आजकल फ्रीलांसिंग का दौर है, सो आप अर्निंग वहां से भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें सीखने को हैं। ये मेडिकल कोडिंग जो है ना, इट्स वन ऑफ दैट एरिया जहाँ पे आप अपनी एक्सपर्टीज जो ले सकते हैं। ये वो टिप्स हैं जो आपको हर कोई नहीं देगा। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस में जहाँ पे एज असिस्टेंट काम करती थी।
राइट मोना, मैं आप पे दोबारा वापस आता हूँ। मुझे आपने वैसे पे स्केल नहीं बताया अभी, जो मैंने आपसे एक्चुअल क्वेश्चन पूछा था लेकिन I'm gonna come on to you later on. So इमरान, प्लीज आप कंटिन्यू करें. Okay, so what I was saying that so it costs you around 4,000 dirham on an average. You can keep in your mind in UAE currency. Conversion rate I cannot say because 1 year back and now it's keep changing. So keep in your mind 4,000 dirham. Probably it costs you for a registration A to Z process if you complete it first attempt. Yeah, that's all. I think we can move to the next. If you're asking about a salary part, so I can mention that 2,500 as a pharma executive without license. If you're coming immediate after graduation to UAE, you don't have a DHA, MOH, a hard license, and you wanted to serve 2 years and get experience and then give exam, during this time, your starting salary will be 2,500. Based on your capacity, maybe you will get it higher increment. Maybe in 6 months, 1 year, you can be a one of the pharmacy in charge. You can be moved to different department. It all depends on your areas of interest and how your employer finds you the best fit for a particular job. So initially, you don't into region. So I'll again say MOH, DHA as well as hard. So among all, hard is the highest paid region, which is you can say starting from 7,000, Dubai 4,500 on an average. Some can give 5,000, some even working 3,500 because sometimes people are desperate to get a job, so they are ready to accept on lower scale, which is not good actually. So I'm talking about on an average, and MOH also the same 4,000 to 4,500. It is your starting salary if you have a license in your hand. I'll strongly say what Mona was mentioning about your skill set and all. So I would like to share one of the story. It's related to Pakistan. 2014, we have 45 pharmacists has been hired from the Pakistan. Okay. In the same company where I was working. Within 6 months time, 35 pharmacists were released, terminated, or they left. When you have to make a plan, never come for a short-term plan. You never make have understanding within 6 month time. If you will not get it, you will be, I don't know what is gonna happen, or I have to find some other shortcuts to reach to a certain pay scale or certain designations or malpractice and all. So be honest with yourself, be honest with your career. Rewards you will get it 6 months or 1 year later. So want to mention you that then the same company has banned Pakistan nationality for 2 years because of malpractice, because of many other reasons. So when they have analyzed, look into the data, most of the issues are coming from this nationality, and it was very painful because when anyone is coming, we could unable to. So why I'm mentioning this? Keep ego at one side. Don't bring your emotions to work. Keep all your problems at one side. When you are having career-oriented objective, then focus at work. Don't bring other things. So that's my strong message to all of people who are aspiring to come to UAE, because I've seen so many people, they get upset, they get desperate. They are coming even after getting married. They want to run the family, or once they come here, they have planned immediately after 6 months, 2 years to get married, and their responsibility keep increasing. Okay, that's absolutely fine. So whenever you plan your career and your personal objectives, always think in your mind, what is your pace? How fast you can go and how honest you can be, and integrity is very important. So from last 10 years, I learned one thing. People say that skill can be learned or skill can be taught, but attitude cannot be changed. Exactly. So the very well said. willingness is very, very important. हम लोग if you are willing to work, बिल्कुल हम लोग जो है ना बड़ा
एक लकीर के फकीर हैं हम लोग, जो ना बस एक चीज को ऊपर फोकस कर रहे होते हैं कि डिग्री कर ली है, लाइसेंस दो, मैं तो यूएसए जाऊंगा, मैं तो दुबई जाऊंगा। एंड दे दे डोंट थिंक कि स्किल डेवलपमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है। मैं तो कह कह के थक जाता हूँ बच्चों को, मैं आजकल अब यही चीजें सिखा रहा हूँ, बट आई थिंक दे आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ मैच्योरिंग देमसेल्व्स। एंड लेकिन कुछ जो से अक्लमंद लोग हैं ना, वो समझ जाते हैं चीजों को कि आगे जो दौर है ना वो डिग्रीज का नहीं है, वो स्किल का दौर है। अगर आपके पास स्किल है, यू विल बी सक्सेसफुल, अदरवाइज यू विल बी ऑब्सोलीट, आप खत्म हो जाएंगे। आपके पास कम से कम कुछ नीश एरिया आपका डेवलप होना चाहिए जिसके अंदर कोई और बंदा ना हो, या एटलीस्ट मिनिमम saturation ho. So talking about saturation, Imran, what is the market condition right now in Dubai and Abu It's very Dhabi good. वगैरह? Market is growing. Yeah, it's very good all over UAE. Market is growing very drastically in after the COVID. Those people who were investing in a non-healthcare division, they are more keen to invest in healthcare division. So pharmacy is one of that. We have seen tenfold growth in last 1 year time in many Yeah. companies. So Wow, nice. even individual smaller group to larger group, individual pharmacy and all those things, they are expanding like anything. And I would Nice. like to mention few more points before my connection get lost. So हाँ जी जरूर। yes, you have an option for retail pharmacy as a community pharmacist. You have option for hospital pharmacist. You have option for clinical pharmacist. So now MOH, Ministry of Health, issue a license for clinical pharmacist as well. That is only possible when you have worked as a clinical pharmacist in hospital minimum 2 years. So those people who are coming after hospital experience, they have an advantage. Sometimes they accept 2 years and sometimes they accept 3 years experience. Related to experience, I would like to mention one more thing. If you have experience less than 6 months, try not to add that experience certificate. Minimum your experience certificate should be 6 months, not 1 month, and you try to have 10 certificates in 2 years time. It's not going to work. So at Very nice point. least six months you can have minimum. Apart from that, people who are coming to UAE, they have aspiration to work as a med rep. Yes, there are options available, but in a short span of time, you can get driving license and you can move on, but options are there. Similarly, people have a lot of understanding to work in pharmacovigilance. There is a scope in government sectors, so people are working in pharmacovigilance as well. So I strongly say that our profession is very, very nice profession. Let's be proud on our profession. What we are, you must never degrade yourself. You should love this profession, because if we don't give a value in our discipline, in our communication, or even way of working, people will not respect us. So the important, maintain your integrity. Being a pharmacist, it's very, very important. Those people who are having understanding, okay, these are pharmacies, they are who are going to change perception. We are the one. How? With our work and work ethics. It's very important. So anything else, Umaid, to be added? Nicely said. बिल्कुल nicely said, Imran. Thank you very much. Again, मुझे डर जो सा कनेक्शन का ही रहता है, so I had a lot to comment, लेकिन मैं उसको later on के लिए रख लेता हूँ. मैं quickly jump करूंगा वीजा ऑप्शंस के ऊपर, कि बड़ा एक important question है. बच्चे पूछते हैं कि यहाँ से निकलने का तरीकाकार क्या है, किस वीजे पे निकला जाए. आई नो वन स्टूडेंट जिसने रैंडमली अप्लाई कर दिया फॉर विजिट वीजा एंड ही गॉट रिजेक्टेड. आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन. अच्छा, मैं ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई डोंट नो, मैं आप लोगों से कंसेंट लेना चाहूंगा, इसके ऊपर भी कमेंट लेना चाहूंगा. अकॉर्डिंग टू दैट स्टूडेंट एंड हिज एजेंट, जो हमारी एक जो शिया हजरात हैं, मतलब सैयद जिनके नाम के साथ लगता है, वो उनके अकॉर्डिंग टू देम कि जी उनके वीजाज रिजेक्ट हो रहे हैं, एंड आल्सो दोज हु आर फ्रॉम साउथ पंजाब. आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट. वो ये एक र्यूमर है. मैं चाहूंगा कि आप इसके ऊपर कमेंट करें कि
यूएई की शायद जो सा वो ईरान के साथ लग रही है, तो शायद दैट इज द रीजन फॉर द रिजेक्शन ऑफ वीजा। क्या ये र्यूमर दुरुस्त है या इसमें कोई हकीकत है या नहीं? Well, probably a person who is a victim can be one of that, one of in thousand, but it's not a major or very prominent reason has been come across. So there is no such rule or something like that because of this particular, what else say, a category. No, there is no such. Visa, Very when we nice. talk about anyone who is 18 years old can get a visa. I simply can say that. Now, why visa is getting rejected when your passport information and the form filled and your degree or other informations are not matching. Your date of birth is not matching with other documents what you have submitted. They will verify each and everything. Then visa rejection will come. Else visa rejection, there is minimum 0.0001% there is a chance visa rejection will come. And that's why I said anyone who is 18 years plus can come to UAE independently alone. So visa has no issue. Visa you can get from Pakistan and someone can send here and you can come. Make your timeline. Umair has mentioned in the beginning SWOT analysis. It's a very powerful tool. Do the SWOT analysis of yourself and what are the threats you have. You have to work on it. It's not only to identify, work on how you can convert that threats and what are weaknesses you can convert into strength. So SWOT analysis is very, very important for an individual or a candidate who is coming to UAE. Yes. Right. Any more questions? I think I should open the floor for questions now because we are already running short on time. And there are certain other areas that I really want to talk about क्योंकि अभी हमने salaries पे बात इमरान ने तो कर दी है, मोना की तरफ से रहती है, एंड इसके अलावा जो सा है हमने थोड़ा सा लाइफस्टाइल के ऊपर भी बात करनी है कि यूएई में लाइफस्टाइल क्या है और उसके रहना सहना, उसके मतलब मंदरजात जो से वो सारे वो डिस्कस करने हैं. बट आई एम गोना टेक क्वेश्चंस नाउ.